हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। मैं भी पूरी तरह ठीक तो नहीं बोलूँगी पर बहुत बेटर हूँ। आई एम लाइक 80% फाइन, टच वुड। स्टिल 20% रिकवरी इज लेफ्ट, बट आई एम हेडिंग टुवर्ड्स इट, सो टच वुड आई एम बेटर टू. So, moving ahead, a couple of days ago, I posted a video, my virtual red carpet walk, which I did for my film lines. I know you all are very, very excited about my film lines. I'm equally excited, trust me, guys. मैं थोड़ा सा busy हो जाती हूँ दिन भर, इसलिए आप लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ. किसी और प्लेटफॉर्म पे लाइव भी नहीं आ पाती हूँ, बट आई एम इक्वली एक्साइटेड एंड दिस फिल्म इज़ रियली रियली क्लोज टू माई हार्ट. आई वॉन्ट यू ऑल टू meet Nazia and love this powerful story and this character and of course the entire film. And you guys apparently loved the glitter look I did in the video. I'm talking about the red carpet look I created. Although मैंने बड़ी जल्दी में वो look create किया था, but आप लोगों ने मुझे comments में लिखा कि आप लोगों को वो जो glitter eyeshadow look था वो बहुत अच्छा लगा. बहुत simple था, ऐसे मैंने कुछ भी complicated नहीं किया क्योंकि उस दिन मैं और भी कई सारे वीडियोस शूट कर रही थी. So I did not really get much time to explore. But today I will be recreating that look for you. Not exactly that look, I mean close to that look, or maybe I have not really planned. I have all the stuff here. देखते हैं क्या निकल के आता है. But it will be on the glitter side, on the shimmery side. Maybe we add a little bit of liner to it क्योंकि उस दिन मैंने eyeliner नहीं करा था because इतना time नहीं था मेरे पास. जो समझ में आया कर दिया. But apparently you all liked it. तो आज हम थोड़ा और वक्त लेके एकदम आराम से अच्छे से मैं आप लोगों के साथ मैं भी I mean I'll also think कि क्या करना चाहिए और अच्छे से करते हैं आज, maybe with a little bit of liner and all. So let's just start. So first up, start with a clean face. That is very very important. मैं हमेशा बोलती हूँ wash your face, and I use a nice face serum so that the skin stays well hydrated even after the application of the makeup. Like now also I'm going to take a little bit of the serum and rub it all on my palms and apply it on my face. एक अच्छा सीरम हाइड्रेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो मैं लगा रही हूँ. और उसके बाद lastly what you can do is you can seal the deal with a moisturizer. So I've been loving this newly launched Aqua Glow range by Mamaearth. It is really nice. It has a face wash, a face serum and a moisturizer. Ooh, it smells so soothing and nice. It's like full of hydration. So monsoons need a little bit of extra attention for hydration. और ये जो range है, this will take care of it as it is made of Himalayan thermal spring water and the goodness that comes with it. Yes. तो ये आपको monsoons में ये जो range है ये बहुत ज़्यादा help करेगी. आपकी skin एक्स्ट्रा ड्राई जो हो जाती है, आप चाहे कितना भी पानी पी लें, ऐसा होता है आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये रेंज. फिलहाल तो आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉइस्चराइजर इन इटसेल्फ इज सो गुड, बट आई हैव ऑलवेज मेंशन दैट व्हेनेवर यू पिक अप अ प्रोडक्ट ऑलवेज गो फॉर अ रेंज. आई ऑलवेज से दिस. सो इसका फेस वॉश, फेस सीरम एंड मॉइस्चराइजर भी है. ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है. लेट मी जस्ट शो इट टू यू एंड just see the texture. See, it makes it so easy to apply. Let me tell you, because the texture is so light and so smooth. I have taken just a little bit and I'm going to rub it all over my hands and apply. See, it's so light and smooth and it smells so good. So इस product में hyaluronic acid है, which is great as it has water retention properties, and aloe vera भी है which has so many vitamins, antioxidants and anti-inflammatory properties. मैं हमेशा aloe vera के बारे में आप सब लोगों को बताती हूँ कि aloe vera आपके स्किन के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए aloe vera कितना अच्छा है. तो basically anything with aloe vera is an elixir for your skin.
And Himalayan thermal spring water is always known for its therapeutic properties. So guys, a good moisturizer which is made of so many natural ingredients is something that I look forward to. Plus, this one will reverse the UV damage done to your skin apart from hydrating and nourishing your skin. You all know how much I love aloe vera. I freeze it and apply it to soothe my skin. So all in all, I must say that you should give it a read, proper read when you're buying anything, especially for the first layer of your skin. You've got to invest in a brand which is into ethically and respectfully sourced natural ingredients like Mamaearth. So do good to your skin, guys, and also to the environment with their Plant Goodness initiative. This I must have spoken 1,000 times about, and I love this initiative. They plant a tree in your name with every purchase made from their website and also share the exact geolocation of it. Also, Mamaearth has launched its very own app. Yay! So the links to the app are in the description box, and do not forget to use my promo code, which is HINA2021, for an additional 20% discount when you shop from www.mamaearth.in. All the purchase links are in the description box. Do check them out. So I am done with all the goodness on my skin and I'm fully prepped for this look, this new, or I would say I'm kind of recreating my look, but I'm not going to do it exactly the same way. हम देखते हैं हम आज क्या करते हैं, but I am super excited. चलो अब हम makeup शुरू करते हैं. So I am done with the foundation. I'm going to apply this loose powder just below my eyes because glittery और कुछ भी shimmery makeup का ये एक बहुत बड़ा flaw कहूँगी मैं. Starts falling and then falling तो चलो ठीक है, उसके बाद चिपक जाता है. तो इसलिए मैं पहले से powder लगा दूँ. So usually it is the other way around. You should go for the eyeshadow first and then clean up all the mess and then go for the foundation. आज मैंने थोड़ा उल्टा किया. मैं खुद भी यही करती हूँ हालांकि. But it's okay. Nonetheless, I am ready. तो ये आप जो कलर मैंने सेलेक्ट किया है, ये कलर आप, this is more of a lavender eyeshadow with a silver glitter on it. I'm gonna do the outer corner of my eye. इतना टाइम भी नहीं था उस दिन जितना मैं इस वक्त कर रही हूँ, like जितना भी इस वक्त कर रही हूँ. उस दिन बस इसे ग्लिटर लिया था और लगा लिया था. ये क्रीज सेट करने का और वो सब करने का टाइम ही नहीं था मेरे पास. Add a little dark brown on the corner over here. थोड़ा सा darker than what I used on the crease. Blending is the key when it comes to eyeshadows. Whether you use the brush or your fingers or whatever. I'm keeping the inner corners and the center of my eye clean because I'm going to use a different color on it. Okay, so I'm taking a little bit of lavender from this and I'm going to put it sometimes अगर कोई कलर आपको ऐसा लगे कि डार्क है तो आप उसको लाइट करने के लिए एक एक्स्ट्रा कलर यूज़ कर सकते हैं. I think that's enough color. What do you say? Because I'm going to play with the glitters as well, तो बहुत ज़्यादा कलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. Lavender eyeshadow with a silver glitter. But make sure आप extra glitter, बहुत ज़्यादा glitter ना लगाएं, मतलब glitter से ही ना भर दें eyes, because you know, both the colors should be visible. I mean, the glitter also should be seen, and at the same time, आपने जो lavender use किया है as a base, that also should be visible. आपको ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि एक आई पे ज़्यादा glitter हो और एक आई पे कम. So you have to make sure दोनों eyes पे equal glitter हो. And to check that, you should always move your head like this.
आपको पता चल जाएगा, बिकॉज आप ऐसे स्ट्रेट देखेंगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा. तो अगर आप ऐसे मूव करेंगे योर हेड, सो यूल बी एबल टू सी कि कहाँ कहाँ क्वांटिटी कैसी है. अगर कहीं भी आपको लगे कि नहीं यहाँ क्वांटिटी ज़्यादा है कंपेयर टू द अदर आई, so you can remove that or you may add on to the other eye. So I think I'm done with the glitter part. So now what I'm going to do is I am going to add eyeliner to it. So I'm going to use this sketch and just define the outer. Now the other side. Yes, I do the left with the left hand. I'm just doing the entire look for you, although I am done with my eyes, almost done, but I'm still, you know, just to let you know कि ये जो पूरा look है जब आप recreate करेंगे तो कैसा लगेगा. And I have to tell you, जब आप जल्दी जल्दी में कभी कुछ कर देते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा हो जाता है और आपने सोचा भी नहीं होता है कि वो इतना अच्छा होगा. Yes, mascara done, everything done. Just a little bit of, look at my hands. Just a little bit of lip liner, because I am only going to use the gloss because I already have a lot on my eyes. So I'm going to keep my lips. There you go. Do let me know how did you like this look. How do you find my eyes, my entire makeup. I did the entire makeup for you. मैं usually इतना सारा आई शेडो और ये सब लगाती नहीं हूँ, पर कभी कभी अच्छा लगता है for sure. आप लोग मुझे बताएं कैसा लगा आप लोग. सो गाइज, जितना इम्पॉर्टेंट मेकअप है एक लड़की के लिए, मेरे लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है. कम ज़्यादा क्वांटिटी डजंट मैटर, बट आई लव अप्लाइंग मेकअप ऑन माई स्किन. बट उतना ही इम्पॉर्टेंट जो फर्स्ट लेयर आपकी स्किन पे जाता है वो है, विच मीन्स मॉइस्चराइजेशन, हाइड्रेशन. तो वो for that you should definitely use the right products on your skin. It is very very important. Even if you have to invest on your first layer, it's okay, please do that, but apply the right product on your skin. I mean whatever suits your skin. इसीलिए फिर मेकअप भी जो है, when your skin is hydrated, तो आपका मेकअप भी एकदम खिल के आता है, अच्छे से शाइन करता है. It's not cakey because your skin is hydrated. Like you see mine, it feels very smooth and nice because my skin doesn't feel really cakey. And you should not really make it cakey by applying a lot of base on your skin, a lot of foundation. Just a little bit of it is enough. Okay guys, thank you so much. I hope you liked the look. आप चाहें तो इसे घर पे recreate भी कर सकते हैं. And if anything is in your mind which you want me to try on my face, I'm not very good with makeup, but जितना भी मुझे आता है, I'll give it a try, I'll give it a shot. Let me know in the comment section below. I will do that. Till then, you guys take care of yourself, keep your skin hydrated, and stay well, stay happy, and do not step out unnecessarily. Mwah. Lots of love. Bye.